हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, मेनली बिकॉज सो फार जब से मैंने ये बाइक ली है और जब से मैंने इस बाइक के ऊपर एक्सेसरीज लगवाई है, देर इज़ वन क्वेश्चन विच आई कीप गेटिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, both on my Instagram as well as on my YouTube channel comments. I think one thing that you always ask me is, what are the accessories that I've installed on my bike, और वो मैंने कहाँ से लिए और उसका प्राइस क्या है. So in today's video, I'm actually going to talk to you about all the accessories that I've installed on this bike. What is the price? Most of the prices I will just give you an approximate because the price change होते रहते हैं every month depending on the demand and supply. So I may not be able to give you the exact price, especially when you will go and ask for the prices. But I'll give you a ballpark figure of how much money I spend on each and every accessory so far. But before that, let me just show you where exactly I'm vlogging from today. I'm in the beautiful hills of the Jim Corbett National Park. This is an area between Lansdowne and Jim Corbett. It's a beautiful area. It's a very unexplored place. Mostly people don't come to this area at all. You can see how bad the roads are. I don't think this is even a road, but yeah, I mean, I came from all the way down from that side and then I went over here. Right now I'm standing here. I just thought this is a very good location for me to talk about the accessories. Full of greenery, the weather is amazing, there are a lot of clouds and it's also raining. So ज़्यादा time waste नहीं करते, quickly I'll just take you through each and every accessory and I will talk to you about why and from where I have installed these accessories. So the first accessory that I'm going to talk about today, and which is probably the most important accessory when you're planning to buy this bike. In my case, the day I got this bike, the first thing I inquired about are these crash guards. This is the engine crash guard. These two are one set. This is the top frame, this is the bottom frame, and with that you also get this engine bash plate. मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ. This is the engine bash plate. This one. So ये तीनों मैंने एक साथ ली थी. ये तीनों Zana का प्रोडक्ट है. I think ये मेरे को approximately, if I'm not wrong, मेरे को around 16,000 रुपीज़ का ये पड़ा था. तीनों का कॉस्ट मिला के मेरे को 16,000 रुपये का पड़ा था. It's little expensive, but trust me, this is the most important piece of accessory that you will require on this bike. मैं already इस बाइक पे 2 बार गिर चुका हूँ and really bad falls on these off roads. One happened while coming from here only, but my bike is scratchless. So hence, I will always recommend bike लेते ही first thing, if you're an adventure tourer rider, जाइए और जाके crash guard लगवाइए. इसके साथ ही मैंने Zana का saddle stay भी लगवाया था. Saddle stay basically आपको help करता है to put your luggage, saddle bags on your bike. At the same time, this also gives you a bit of protection. Your silencer and your, the frame on that side is slightly protected even if you fall on your bike. So for both these things, I think, your crash guard, bash plate and the saddle stay, ये तीनों मिला के मेरे कुछ 18,000 के करीब का पड़ा था. तीनों मैंने Zana से लगवाए थे. Although मैं ये बोलूँगा कि मैंने मार्केट में एक्चुअली Zana से बेटर प्रोडक्ट भी देखे हैं, which look to me much stronger in comparison to the Zana product. But again, आप लोग research कर सकते हो. Prices are almost the same whether you go for Zana or with some other brand, unless you go for a high-end brand for your saddle stays and your engine guards. Apart from the saddle stay and the engine guard, बाकी सब मैंने बाकी और कोई accessory मैंने Zana से नहीं लगवाई है. All the other accessories are basically from another shop in Karol Bagh called Moto Planet. I'm going to leave their number and their link also in the description. I think I found them very, very helpful. They were very responsive. The work that they did on my bike was amazing. जब भी मैं उनके पास गया हूँ, they have given me a great service and I've always enjoyed buying products from them. So ये तो हो गया आपका bike protection के accessories. इसके अलावा the next thing which is highly recommended from my side are these handle guards. One on this side, one on this side. This is again Bagbuster handle guard. These are not the original handle guards from Bagbuster. India में you also get a lot of copy of Bagbuster.
but its quality is very good, and that's why I went for this. This is not cheap. This was also around 4,000 rupees. I got this from Moto Planet. The good thing is he told me upfront, sir, this is not original. It's your choice whether you want to buy this or not, because the quality to me seemed okay, so I thought let me just buy these handle guards from Moto Planet. 4,000 का ऐसा कॉस्ट था, slightly expensive but again very useful. मेरी बाइक 2 बार गिरी है, एक इस साइड से और एक बार उस साइड से. Nothing has happened to my clutch lever and my brake lever, which is very important for a bike like this, because you know अगर इसका एक बार clutch lever टूट जाए, bike lever टूट जाए, if you're traveling in a place like this, there is no way that you can find a replacement for your clutch lever or your brake lever. So please get this installed if you're traveling on this bike. Next जो मैंने accessory लगाई है वो है headlight grill. This is again very important for the safety of your bike, especially if you're riding in the on the highways, because कई बार हाईवे के ऊपर ना छोटे छोटे पत्थर उड़ के आपकी तरफ आते रहते हैं, और वो एक पत्थर भी अगर इस हेडलाइट पे लग गया, दिस विल ब्रेक. सो ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन आपको उससे मिल जाता है. आई विल नॉट से दिस इज the best protection, but again some protection is better than no protection. This was not very expensive. I think around 1,500 rupees का cost है इसका, if I remember this correctly, but I love this. Next जो मैंने बाइक पे लगाया है, which is another important piece of accessory that you will require, is this mobile holder from Rhinox. I've made a separate video on this one. I'm going to leave the link for that video in the I button somewhere. Please go and watch it. Honestly saying, now after riding this bike for around 1,500-2,000 kilometers, I am not very happy with this. When you're on the highway, आपको इसके ऊपर कुछ नज़र नहीं आता. You can't see the map at all. So I will actually not recommend you buying this. This costed me around 1,800 rupees. So it's expensive also, and it is not solving the purpose also. Next जो मैंने बाइक पे लगवाया है वो है this wind deflector. मैंने actually, if you have seen other 310 GS, usually people put this long windscreen in front of the bike. I have not installed that on my bike. मुझे actually वो पसंद नहीं है, especially इंडिया में जो भी क्वालिटी मिलता है उसका. I don't like the quality of those windscreens at all. बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है, उसमें scratches बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, and then visibility becomes a problem. So मैंने वो इंस्टॉल नहीं कराया है, बट अगर आप वो कराना चाहते हो तो 2,000-2,500 रुपये में आपको विंडस्क्रीन मिल जाएगा. दिस कॉस्टेड मी अराउंड 1,500 रुपीज़. इसको मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है. यूजली ये आपके विंडस्क्रीन के ऊपर लगता है टू डिफ्लेक्ट द विंड, बट इन माई केस आई इंस्टॉल इट डायरेक्टली ऑन दिस, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी इन डिफ्लेक्टिंग द विंड ऑन दी हाईवे. इवन एट हाई स्पीड मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता है विंड ब्लास्ट का. अब वैसे तो BMW ने बाइक की हेडलाइट को इस बार बहुत इंप्रूव कर दिया इन द न्यू BSX वर्जन. फिर भी मैंने ये छोटी फॉग लैम्प्स लगा लिए मेनली फॉर हाईवे राइडिंग. ये मैंने लगवाया था करोल बाग से ही था, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ दीज लाइट्स. आई विल एक्चुअली गेट दिस चेंज्ड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल गो टू करोल बाग, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू दीज हेडलाइट्स. डोंट गो फॉर दीज चीप फॉग लैम्प्स इज व्हाट आई विल रिकमेंड यू. Go for a branded headlamps and not for a headlamp or a LED light like this one. Okay, so what next? Unfortunately, मेरा top box अभी मेरे पास नहीं है, but I'll leave a photo of my top box on this frame somewhere. I'm using a 42-liter GV top box. This is the rack where the top box is supposed to be fit. It's a very handy and easy to use top box. I really like the quality of it. थोड़ा plastic type लगता है, but it again does the job really well. ये मैंने लिया था रफली अराउंड 8,000 रुपीज़ के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नाउ द नेक्स्ट एक्सेसरी दैट आई विल शो यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी इफ़ यू आर राइडिंग ऑन ट्रेल्स लाइक दिस, स्पेशली इन द रेन्स. दैट इज़ द टायर हगर. इसके बिना आप बारिश में बाइक चला ही नहीं सकते हो. इतना कीचड़ उछलता है इस बाइक में पीछे टायर से. इवन इफ देयर इज नो पिलियन, इवन देन यू विल गेट द स्लश ऑन योर बैक. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी मैंने मोटो प्लानेट से लगा था. वेरी गुड क्वालिटी. 2,000 रुपये का मुझे पड़ा था ये. ओके, देन लेट मी शो यू सम स्मॉल एक्सेसरीज दैट आई हैव ऑल्सो इंस्टॉल्ड ऑन द बाइक. दिस इज़ GoPro camera holder. I have installed this in this front frame itself, so it's very sturdy. It doesn't shake so much when I'm riding, so the picture quality or the video quality is actually very good. I think ये मेरे को पड़ा था around 1,500 something का. These stickers again very good looking BMW 310 GS kind of stickers. Amazing branding. It just makes your tire look much more better. So that is why मैंने ये stickers लगाया था. These are not very expensive. I think I paid around 1,000 rupees or something for these stickers.
पर अगेन अगर आप ये स्टिकर लगा रहे हो, माई एडवाइस वुड बी डोंट डिपेंड ऑन दीज स्टिकर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैक्सिमम आई थिंक आफ्टर 3 to 6 months you might have to replace these stickers. मेरे को ऑलरेडी 3 महीने हो गए स्टिकर लगवाए हुए, एंड आई विल शो यू ऑलरेडी ये स्टिकर एक दो जगह से निकलने लगा है. सी फ्रॉम हियर. ओके, द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सेसरी इज दिस शीट कुशन. दिस इज फ्रॉम ग्रैंड पिट स्टॉप. आई लव दिस प्रोडक्ट. आपको बस इसको यहाँ से हवा भरनी है एयर कुशन के अंदर, एंड वंस इट इज़ फुल इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन योर हाईवे राइडिंग. अगर आपको हवा रिलीज़ करनी है, यू जस्ट हैव टू unscrew from here, air will release from the seat cushion. ये आपकी सीट के अंदर ही फिट हो जाता है, so it's also very safe. Next that I've installed on my bike are these Footpegs. These are basically Footpeg extender, I would say. जो default Footpegs आते हैं, they are very very small, and sometimes you know when you're on sometimes when you're riding on surfaces like this, उस फुटपैग के ऊपर आपका ग्रिप अच्छा नहीं बनता है, स्पेशली इफ़ यू वेयरिंग शूज़ लाइक यू नो द राइडिंग बूट्स. सो फॉर दैट पर्पज़ आई हैव इंस्टॉल्ड दिस. नॉट वेरी एक्सपेंसिव. अगेन दिस हैज़ G310 GS ब्रांडिंग. ये भी मैंने मोटो प्लैनेट से लिया था, अराउंड 800 से 1000 रुपये के बीच में. साथ में मैंने ये भी लगवाया था. दिस इज़ योर गियर लीवर एक्सटेंशन. आई डोंट नो मैंने क्यों लगवाया ये, टू बी ऑनेस्ट. ये भी कोई 1000-1200 रुपये का था, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट एट ऑल. इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है. एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू चेंज द गियर यूजिंग दिस गियर लीवर एट ऑल. द अदर थिंग विच आई हैव इंस्टॉल्ड इज दिस. दिस इज़ बेसिकली योर साइड स्टैंड प्रोटेक्टर. इसका एक रबर का कवर आता है बाय डिफ़ॉल्ट. आई हैव चेंज दैट टू मेटल कवर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑन योर बाइक. अगर ये थोड़ा सा भी ख़राब हो जाएगा तो आपकी बाइक मूव नहीं होगी फर्स्ट गियर में. सो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वुड से अगर आपकी बाइक ले रहे हो तो प्लीज़ इसको लगवाओ. ये भी महंगा नहीं है, 1000-1200 रुपये में आ जाते हैं, बट यू नो यू विल एटलीस्ट हैव योर पीस ऑफ माइंड. विद द फुटपैग एक्सटेंडर आई हैव ऑल्सो इंस्टॉल्ड द ब्रेक एक्सटेंडर. इसका ये ब्रेक आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये इतना सा ब्रेक पैडल है आगे वाला, विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल विद द बूट्स दैट आई वेयर. सो हैंस ये मैंने अलग से लगवाया. ये भी कोई 700-800 रुपये का था. सो द नेक्स्ट एक्सेसरी दैट आई वांट टू शो यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. इट इज़ द टैंक बैग. द टैंक बैग दैट आई एम यूजिंग इज़ दिस मोनोलॉक टैंक बैग. आई एम नॉट यूजिंग यू नो दोज हुक्स. वो जो हुक वाले जो टैंक बैग आते हैं मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ. Because the tank is of plastic, so I can't use the magnetic tank bag on this bike. Hence I went for the monolock one. इसकी capacity ठीक है, it's not very big in size also. I think it's a perfect fit for a bike like this. The space is enough also. BMW ने मेरे को बाइक के साथ वैसे एक टैंक बैग गिफ्ट करा था, द BMW ब्रांडेड टैंक बैग. मैं उसका फ़ोटो ऊपर छोड़ दूंगा कहीं लिंक में. आई जस्ट फाउंड इट टू बी टू बिग फॉर दिस बाइक. अच्छा बैग है वो, बट मुझे बहुत बड़ा लगा. थोड़ा हैंडलिंग में मेरे को अनकम्फर्टेबल लगता है विद दैट बैग, सो हैंस आई डोंट यूज़ दैट बैग टू मच. ये बैग का कॉस्ट मुझे पड़ा अराउंड 4500 रुपीज़. थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक अगेन इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर अ राइडर हु इज़ ट्रैवलिंग ऑन हाईवेज एंड ऑल. बहुत सारा सामान आप इसके अंदर डाल के छोड़ सकते हो, एंड व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ द बाइक आप इसको आराम से निकाल के अपने साथ लेके जा सकते हो. आई विल ऑल्सो लीव photo of the saddle bags that I'm using. Saddle bags that I use are from Invictus. Again 4000-4500 के अप्रॉक्सीमेट उसका प्राइस था. The quality is decent. मैं उनका फ़ोटो एक डिस्क्रिप्शन में डाल के छोड़ दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्वालिटी है उसकी. देखने में अच्छा लगता है बाइक के ऊपर. I just feel कि for a bike like this, instead of a saddle bag, I should use the side panniers, the hard ones. Probably I will upgrade to that very soon. Now I don't know how much is the total money that I spent on this bike so far in terms of the accessories, but I think roughly around 70 to 80,000 तो मैंने definitely इस पे खर्च कर दिया है in buying all these accessories so far. I know थोड़ा ज़्यादा लगता है, but again for a bike like this you might have to spend slightly more. कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके लिए mandatory है, which is very important to keep your bike safe, like the engine guards, saddle guards and stuff like that. And then the few accessories that you just put, आप अपने शौक के लिए कुछ accessories लगाओगे, which is also fine. अगर आपको कोई भी query हो about any of these accessories that I've installed on my bike, if there's anything you want to inquire or know about in terms of the performance of any of these things, और कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, any more details, you can always reach out to me through my comment box.
and also through my Instagram handle, and I'll be more than happy to help you with that. I hope आपको मेरा बाइक पसंद आ रहा हो. I hope आपको ये देखने में अच्छा लग रहा हो. मुझे बहुत पसंद है this bike when it is fully loaded with the side panniers and the top box and everything. I really like this bike. For this video इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ. And if there's any query, please reach out. Don't hesitate. And until my next video, stay safe and keep riding. Have a nice day. Bye.